Class 8 chapter 11 exercise 11.1 question number 10 and exercise 11.2. Question number 10. A loaded truck travels 14 km in 25 minutes. If the speed remains the same, how far it can travel in 5 hours? Answer 10. Traveling time taken in minutes, travel distance in kilometer. Proper proportion is direct proportion. So 5 hours, that is, let loaded truck covered the distance x kilometer in 5 hours or 300 minutes. So in 300 minutes it will cover the distance x kilometer, that is x kilometer. In direct proportion, so 25 by 300 equal to 14 by x, then 25 into x equal to 300 into 14, then x is equal to 300 into 14 by 25, x is equal to 168 kilometer. Distance covered by the loaded truck, 168 kilometers. Exercise 11.2. Which of the following are inverse proportion? Number 1, number of workers on a job and the time to complete the job. The time taken for a journey and the distance travelled in a uniform speed. Area of cultivated land and the crop invested. 4th, the time taken for a fixed journey and the speed of the vehicle. 5th, the population of a country and area of land per person. Answer 1 first. The number of workers on a job and time taken to complete the job, it is inverse proportion, because if the number of workers increased, then time will be taken as less time than first. If number of workers is decreased, then time taken will be more. So it is inverse proportion. The time taken for a journey and the distance travelled in a uniform speed, that is direct proportion. If time taken of journey is increased, the distance travelled by that speed will be increased, and if it decreased, then it will also be decreased. So it will a direct proportion. It is not inverse proportion. 3rd, area of cultivated land and crop harvested. Direct proportion. It is not inverse proportion, because area of cultivated land is increased, then crop harvested will also be increased. If area of cultivated land is decreased, then crop harvested will also be decreased. So it is not inverse proportion, it is direct proportion. 4th, the time taken for a fixed journey and the speed of the vehicle. If time is increased, then speed of vehicle will be decreased. If time taken is decreased, then speed of vehicle will be increased. So it is inverse proportion. The population of a country and area of land per person. If population of a country increased, the area of land per person will also be decreased. If population is decreased, then land per person will also be decreased. The population of a country is increased, then area of land will be increased. If it is increased, then it is also decreased. So it is inverse proportion. यहाँ पर मुख्य बात यह है कि जब वर्कर की संख्या को बढ़ाया जाता है तो टाइम कम समय में कार्य पूर्ण हो जाता है,
लेकिन अगर संख्या कम रहती है तो ज़्यादा समय लगता है। इसलिए पहला पॉइंट इनवर्स प्रोपोर्शन में है। सेकेंड पॉइंट, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर टाइम जो लिया जाता है एक डिस्टेंस को पूरा करने के लिए यूनिफॉर्म स्पीड से, तो डिस्टेंस जो कवर्ड होती है वह यूनिफॉर्म स्पीड से ज़्यादा होती है। अगर टाइम कम लिया जाता है तो कम डिस्टेंस कवर्ड होती है उसी स्पीड से। इसलिए यह एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यहाँ पर जो है समय कम होने पर ट्रेवल डिस्टेंस भी कम, समय बढ़ने पर ट्रेवल डिस्टेंस भी ज़्यादा, इसलिए यह एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप इज हार्वेस्टेड। अगर एरिया बढ़ा दी जाती है तो क्रॉप भी बढ़ती है, अगर एरिया कम होती है तो क्रॉप भी घटती है, इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है। फोर्थ पोर्शन, द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी। अगर एक निश्चित यात्रा के लिए जो समय लिया जाता है, अगर उस समय को बढ़ा दिया जाए तो स्पीड कम हो जाएगी, कम स्पीड से ही ज़्यादा समय लगेगा। अगर समय कम कर दिया जाता है तो स्पीड ज़्यादा होगी, तभी इसका मतलब कि यह एक इनवर्स प्रोपोर्शन है। द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, अगर कंट्री की पॉपुलेशन और एरिया ऑफ लैंड का जो रिलेशनशिप है, वह पॉपुलेशन ऑफ कंट्री अगर बढ़ा दी जाती है तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन घट जाएगी। अगर पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री कम कर दी जाती है तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन अगर कम होती है तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन जो है अधिक होगी, अगर पॉपुलेशन अधिक होती है तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन कम होगी। इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ कंट्री और एरिया ऑफ लैंड दोनों में इनवर्स प्रोपोर्शन है।